But Saurabh Tiwari from the Hindu side again speaking about how this is already a big win for them. Right now, we have re-established our connection with our legal reporter Ananya Bhatnagar. Ananya, right now the question remains is, will the Muslim side take this up to the Supreme Court? And if it does, then does that mean the ASI survey that has been given a go-ahead to right now might again get halted? What exactly might the timeline be then? Well, definitely, the Muslim side will definitely go to the topmost court of the country. They will exhaust all the legal options before a ASI survey could actually take place. They will try to file a caveat before the Supreme. They will try to file a petition before the Supreme Court challenging this particular order that has been passed by, in fact, the Allahabad High Court. In fact, urgent mentioning can also take place in a few minutes from now. But at the same point of time, what we have to remember is that this is an order coming in from the Allahabad High Court. This is second appeal that has been allowed in, the case, and now very, very clearly the Hindu side has two subsequent orders into its favor. One by the Varanasi court itself, which had ordered for an Archaeological Survey of India survey at this particular site. It was a 30-member team that was conducting this particular survey. However, the same was stayed by the Supreme Court, and a breather was given out to, in fact, the Allahabad the Muslim side, that is the Anjuman Intezamia Masjid Committee, to approach the Allahabad High Court. And then the Allahabad High Court too has now come out with its order very clearly saying that the scientific survey is something that is very, very important in the interest of justice, and there is no point staying the order. Ananya, do stay with us. I'm very sorry to interrupt you, but we do have a ground report coming in. Let's have a look at that. जिसके आधार पर इस सर्वे को रोका जा सके, जैसा कि जस्ट मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर ने कहा कि स्टेट में कहीं भी। Ananya, coming back to you, over to you about what you were saying about what the timeline of the survey might look like if the Muslim side decides to go into the Supreme Court. Well, definitely the Muslim side can decide to go into the Supreme Court, and they will definitely be going to the Supreme Court as per my knowledge, because this is the last legal option that is available to them. And if at all the Supreme Court says this particular survey, just like it had done in the Wuzu Khana area, then there would be a halt on this survey. But at this point of time, we also have to remember that the Supreme Court, when it had last time asked these Anjuman Intezamia to actually approach the Allahabad High Court, it had stated at that point of time, but that was just to grant a breather to the Muslim side to approach a higher forum. This is not the case here now. It is the Supreme Court itself now, and one thing that is very, very important, Shreya, to note is that, the section 75 of the CPC, that is the Code of Civil Procedure, was being cited by the Muslim side continuously, that, the Archaeological Survey of India survey is something that cannot be allowed at this particular stage. This is a premature application by the Hindu side. However, the court has now dubbed all of those claims, clearly saying that, the Archaeological Survey of India survey is something that is the need of the hour and is in trust of the justice, and has now been allowed. Now, what would be also very clear from the Allahabad High Court order when the detailed judgment copy comes out is that, number one, what are the conditions, if any, that have been imposed on, in fact, the Archaeological Survey of India? Because remember that the main contention after the Archaeological Survey... Ananya, do remain with us. We do have some live reactions coming in on this. Let's have a look. आस्था को देखते हुए फैसला सुनाया। ठीक है, मैं माहौल आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि वैसे तो आप किसी भी समय में आ जाइए बनारस, यहाँ पर माहौल एकदम भक्तिमय रहता है। भोले के भक्त देश के कोने कोने से तो पहुँचते हैं, विदेशों से भी पहुँचते हैं। दरअसल ये ज्ञानवापी परिसर आप देखेंगे, यहाँ पर जैसा कि मुख्यमंत्री योगी ने बयान भी दिया था कि जो दीवारें हैं उसमें संस्कृत में श्लोक लिखे हुए हैं, यहाँ पर देव प्रतिमाएं हैं, शिवलिंग मिला हुआ है, जो कि सनातन संस्कृति के सबूत है। अब जब एएसआई की टीम आज किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँच सकती है, उसके बाद सर्वे शुरू होगा, कोई समय सीमा नहीं है। जैसा कि मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि यहाँ पर ढांचे को नुकसान हो सकता है और इस स्टेज पर नहीं होना चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि किसी भी स्टेज पर हो सकता है। उधर अगर हम देखेंगे तो काफी तादाद में यहाँ पर लोग हैं। देखिए सुरक्षा किस तरीके से यहाँ पर पुख्ता हो चुकी है। कुछ और लोगों से भी हम बातचीत की कोशिश करेंगे। आप बताइए, आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? फैसला स्वागत योग्य है और जल्द ही हम लोग के पक्ष में फैसला आएगा और मंदिर, भव्य मंदिर बनेगा। हर महादेव, हर महादेव, मंदिर बनेगा। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा, जो ये फैसला आया है, ये बहुत ही अच्छा फैसला आया है। जो ये नगरी है पूरी, ये काशी नगरी है, और यहाँ महादेव की ही सारी आपको निशानियाँ मिलेंगी। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ की जय, जय करो वीर बजरंगे, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप किस
तरीके से देख रहे हैं? आप कहाँ से आए हैं? हम आए गाजीपुर जिला से। आप कैसे देखते हैं हाई कोर्ट के फैसले को? बहुत अच्छा देख रहे हैं, बहुत बढ़िया है। ऐसा ही होना चाहिए, फैसला हिंदू के पक्ष में होना चाहिए। ठीक है, मैं एक बार फिर से, जो माहौल है ये आपने देखा, जो यहाँ पर भोले के भक्त हैं, लेकिन ये ज्ञानवापी परिसर जिसको लेकर के पूरा विवाद है, अभी भी यहाँ पर 5 वक्त की नमाज होती है। हालांकि हिंदू पक्ष की तरफ से ये भी कहा गया था कि नमाज पर रोक लगाई जाए, लेकिन जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि एएसआई का सर्वे जब होगा उसके बाद, कितना कोई समय सीमा नहीं है कि कब तक ये सर्वे होगा, लेकिन जो 21 जुलाई का जिला जज का फैसला था वो मान्य होगा। इस बीच केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है हाईकोर्ट के फैसले के बाद, ये हम आपको सुनाते हैं।